So, how are you all? So today we came up with some of the series of the question. This is from your paper JRF Eco 2024. Okay, UGC net. Okay, so this is the paper. Now see, we have to match list 1 with list 2. We have sample standard deviation, sample variance, difference of two independent sample mean, difference of two independent sample deviation. Okay, and these are the equations. So now how we'll find out the answer? So it is very easy. The sample standard deviation is denoted by how? Theta by root n, right? So that is 2 1, this one. Okay, then second one, सैम्पल वेराइंस कैसे किसके साथ होता है? थीटा स्क्वायर बाय रूट 2n, ठीक है, वो वाला. दिस रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड एरर फॉर द सैम्पल वेरिएंस. ओके, स्टैंडर्ड एरर. ओके, नाउ difference of two independent sample means, right? So that one is which one? This one, 4. Okay, the left part is this one. Okay, the standard error of this one. So what would be the answer? This one will be the answer. This one will be the correct answer for this one. Okay, 2. Now we go, the rule of thumb to express price elasticity as markup over marginal cost. So the formula to express price as a markup over marginal cost is given by whom? Is given by Lerner index. Okay, it is given by Lerner index. Okay, and we know P is equal to MC by 1 minus 1 by ED. This one, where ED is the price of elasticity. So this will be the answer. Now calculate the money multiplier, where the RC currency is given 200 billion, deposit is given 400 and excess reserve 800. Okay, तो मनी मल्टीप्लायर कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं? बोलिए. 1 प्लस सी बाई डी बाय आर प्लस सी बाई डी. ठीक है, तो यहाँ पे सी क्या दिया हुआ है? 200. डिपॉजिट कितना? 400. एक्सेस रिजर्व कितना? 800. तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ही ईजी है. 1 प्लस 200 बाई 400 एक आपका आ जाएगा. फिर आपको लेना है आर प्लस 200 बाई 400. ठीक है, तो स्पेसिफिक नो स्पेसिफिक रिजर्व रेशियो यहाँ पे दिया नहीं है, एक्सेस रिजर्व दिया हुआ है, तो आंसर 3.394. ओके, सो ऐसे हम लोग निकाल लेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू हैवंट येट.